जर्नी जो है, ये हमारी जर्नी जो है ये बहुत बहुत इजी तरीके से हो जाती है. So that is, I can say, option trading, it has become very much easy with the help of modern algo. Then abhi aisa hai ki there are few customers, those who keep on asking us, sir, I have a few strategies, I want to create my own strategy, or if I have few parameters, how do I test, how do I trade, and how do I get the better returns from my automations. So yes, when we will see the feature of algo trading feature, so यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, एक एडवांस तरीके का मैं सिस्टम बताना चाहूंगा, जहां पर आप आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो. स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो बहुत इजी हो जाता है. एंड अलोंग विद दैट कि जो एल्गो ट्रेडिंग है, नाउअडेज व्हेन वी स्पीक अबाउट एल्गो ट्रेडिंग, तो एल्गो ट्रेडिंग जो पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो बहुत आज इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एल्गो. अब इजी कैसे हो गया, उसे एक तरीके से हम समझते हैं. So assume that I am a trader, I am an option trader. If I want to trade in the market, and if I am seeing that I want to place a trade where I will create a straddle, I will create a strangle, I will create a butterfly. तो ये 3 स्ट्रैटेजी मुझे बनानी है. अब जब मैं ये 3 स्ट्रैटेजी बनाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे ये तीनों स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स डालने होते हैं. मुझे इसका प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट रेशियो है, वो मुझे समझना है. मुझे देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में लेना है. अब जो मैं स्ट्राइक प्राइस में लेना चाहता हूँ, तो वहां पर माय व्हेन आई से, वहां पर मेरा जो मार्केट बुलिश है या बेरिश है, अगर वो पता कर दिया, तो कोई इंडिकेटर बेस मुझे ट्रेड करना है कि अगर ये इंडिकेटर चलेगा तो ही मेरा ट्रेड हो. सो ये सारे बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स है, राइट. बट व्हेन यू सी और व्हेन यू यूज द मॉडर्न एल्गो, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक न्यू एज टेक्नोलॉजी है, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत बहुत यानी बहुत कम हो गया, राइट. एंड ऑटोमेशन जो है, वो ऑटोमेशन इतने इजी कर दिए है कि यहाँ पर अ लेमैन, जिसको यानी मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, that can also come, he can also come, he can also trade, he can also create his own strategy. So that is how our trading has become fully automated, I can say. And with the help of fully automated trading system, यहाँ पर आपका जो जर्नी है, जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत इजी हो जाता है. Why? Because when you are there in the market, when you are there in the live market, and if you want to implement any strategy, तो वहां पे it takes too long to create strategy, to execute the order. But when you see or when you speak about the modern algo, तो modern algo के अंदर ये जो आपकी लाइफ है वो बहुत इजी कर देता है, right. So automation has created a very, I can say, easiest way of trading. Now also when I speak about the automations, तो आज अगर मुझे कोई automations create करने हैं, so how do I create my automations? So कुछ 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप को 3 अलग तरीके से हम समझते हैं, राइट. So यहाँ पर first is I want to build a strategy. So assume that if I want to create any strategy, so how do I create a strategy? उसके लिए मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट जो पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर मेरे पास होने जरूरी है. तो क्या होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहता हूँ, तो सही मायने में मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूं, तो वहां पर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए कौन से पैरामीटर, कौन सी प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है, जिसकी मदद से मैं मेरी एक स्ट्रैटेजी जो है जिसे मैं क्रिएट कर सकता हूं. So first is when you want to create your own strategy, yes, we have that mechanism also with us कि जहां पर आप आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप क्रिएट कर सकते हो. अब आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. इफ यू वांट, आप वहां पर पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो. प्री डिफाइंड यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है. So there is a two way of understanding algo, two way of understanding automation, जहां पर एक स्ट्रैटेजी आपकी है जहां पे ऑलरेडी आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो चल रहा है, राइट. और एक स्ट्रैटेजी है जो आपको बिल्ड करनी है, टेस्ट करनी है कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूं, तो सही मायने में मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी या नहीं, एक जो मेरा डिजायरेबल रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा या नहीं. सो that is this kind of.
सेकेंड इज व्हेन यू आर एंटरिंग, अगर समझो आपने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, तो ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक आई एम सॉरी, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस डालने होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस डालना है, टारगेट प्राइस डालना है, पैरामीटर डालने हैं, एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म मुझे यहाँ पर मेरा डिफाइन करना है. सो व्हेन आई एम सिलेक्टिंग एनी ऑफ माय एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म, तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म क्या करना है, उस तरीके से मैं यहाँ पर मेरे जो पैरामीटर्स है उसे मैं सेट करता हूं. उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, मैंने मेरे जो कंडीशंस है, मैंने यहाँ पर टेक्निकल्स के कुछ कंडीशंस डालने थे, मैंने वो भी डाल दिए. तो ऐसा नहीं है कि मेरे कंडीशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अगर कुछ कंडीशंस इनपुट किए तो उसके वजह से ही होंगे. मेरे जो यहाँ पर कंडीशंस होंगे वो टेक्निकल या जो चार्टिंग मैं फॉलो करता हूँ उसके बेसिस पे भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ. सो दैट इज व्हाट आई कैन से ब्यूटी, or that is what I can say the expert way of trading. The third part or the third step which you have to do, that is just once you have integrate your system, just you have input all the parameters, all the entry exit level, all the all the mechanisms one you have created. So एक बार वो mechanism create हो जाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जो mechanism हमारा create हो जाता है, उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा मेरी. सो दैट इज हाउ आई कैन से जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन विद जीरो एरर, you can create your own strategy, you can deploy and you can start investing your money. Also with defined parameters, यानी defined parameters यानी कि मैंने अगर सिस्टम में ट्रेड किया है तो यहाँ पर सारे मेरे जो पैरामीटर्स है, that all parameter going to be decided. यानी अगर if I am investing my 1 lakh rupees, so I will fixing that if I am investing my 1 lakh rupees, 10 or 12% should be my return which I am expecting, 4 or 5% should be my drawdown. So when I am selecting, when I am creating a strategy, ये भी वहां पर मैं पैरामीटर सेट करके रख सकता हूँ. Also when you see in the live market, probably I will take you to the entire page, how the entire page looks like, login कैसे होता है, details कैसे आप देख सकते हो. जब भी आप वहां पे देखते हो तो आपको ये भी चीज समझ में आएगी कि how easily we have create this system. Because अगर कोई सिस्टम अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में सबसे पहले तो जो यूजर फ्रेंडलीनेस जो है वो नहीं. And we have tried to create this system as a user friendly system, जहां पर हमारे जो भी client है, he can trade, he can understand, he can do his own analysis. Also based on scanners, आप यहाँ पर स्कैनर्स के मदद से भी जो स्टॉक्स है, जो मार्केट है, जो मोमेंटम है, वो स्टॉक्स जिसे आप स्कैन कर सकते हो. सो एल्गो इज नॉट ओनली एंड ओनली अबाउट वेयर यू डू ऑप्शंस ट्रेडिंग, but Algo is to identify what stock to buy, when to buy, at what price to buy. Also, once you have done all these three things, which is what to buy, when to buy, at what price to buy, the main or important section I can say that is of exit mechanism. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ और अगर मैं वहां पर इन्वेस्ट, जब मैं मेरा पैसा करता हूँ और वहां पर मेरा एग्जिट मैकेनिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो अगर एग्जिट मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा कि वॉट एवर स्ट्रैटेजी विच आई हैव क्रिएटेड, तो वहां पर जो मेरा डिजायरेबल रिटर्न्स है वो मुझे डिजायरेबल रिटर्न्स जो मेरा है वो डिजायरेबल रिटर्न्स मुझे नहीं मिलेगा. सो दैट इज आई कैन से दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो एवरीथिंग इज ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है, आपको जो भी आइडियाज बिल्ड करने हैं, आप सारे ही जो आइडियाज है उसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो. You can build the strategy, you can scan, you can do analysis, and once the analysis part is done, यहाँ पर यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, वो 100% चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज now you are not dependent on anyone, now you are not dependent on a single strategy. Now you can create your own multiple strategies, and based on that your old multiple strategy which you are going to create, वहां पर आपको एक रिटर्न्स अच्छा, राइट. सो not taking your so much of time, I will take you to the direct page where I will show you what is all are the option is available, how you can utilize, how you can trade, how you can invest, so that
on the, I can say tomorrow or Monday when you will log in, you will start with the algo trading, because algo trading is the future, and that is how we are providing this algo trading, that is also in the mobile app. So that is what I feel. I am very much excited to see that all of my customer, they will be very much happy to use this algorithmic system in the mobile app as well. So I will just share my live what I'm showing. Yes. So once you will logged in the page, this page will appear on your screen that now you have logged in successfully. And this is my demo account, so you all can see the entire all the details here. On the indices detail, you will be able to see on the left hand side, as you can see that we have done the collaboration with Modern Algo, so you will be able to see the logo. On the upper side, when you will click here, when the upper side you will click here you will get the option of getting Nifty IT, Nifty Bank Nifty, Nifty mid cap. So multiple option is available when on the live market if you want to see. Then the major important part, that is, as I can see in your screen here, we are providing the two option. Here we are providing the two option. One that is for algo trading, one that is for the option strategies. So based on what category of trading or what category of client you are, you can easily access this system. Then if you will see in the algo trading, we have multiple options with us, and in the option strategy we have the multiple options. So I will show you one by one what is all are the options are available. So now when you will go in the product part, in the product you have a few details. In the product you have few details, that is the algo trading. So algo trading, options and tools. Now if you are seeing here that algo trading is what, that algo trading is system where you can automatically trade. Now in the algo trading you have algo strategy builder, where you can create, build and trade your own strategies. Second option, that is the scalping. So scalping help a client when he is trading, when he is doing intraday trading in the very fast momentum. When the market is on the uptrend, जब market जो है वो एक uptrend में होगा, उस time पे आप जो है यहाँ पर scalping चला सकते हो, because scalping is more over into you have to trade on day-to-day basis, and also it is going to create I can say a hurdle free trade, right? So when you come on the product part, you have algo trading, you have algo strategy builder, you have scalping, and so on. So this is our option when I speak about the algo. Then the second option, that is the options only. So if I'm clicking on the options, option has two option. One is the stock option pick. Second, that is the spread strategy. So now if I'm options trader, then what I will do, that I will select the options trading, and I will keep on continue trading in the options part. तो अगर मैं ऑप्शंस उठा के ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं ये भी चीज कर सकता हूं. उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी ऑप्शन अवेलेबल है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक स्प्रेड जो है वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी. तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी लाइव मार्केट में जब भी मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट या एग्जिट मैकेनिज्म आ रहा है, मेरा जो सिस्टम है स्मार्टली विद द बेस ऑफ एआई, मेरा सिस्टम जो है वो खुद ही सारी चीजें कर लेगा. So this is the ready-made strategy. This strategy algo trading, in algo trading, if you will see, you have multiple templates are available. So based on that multiple template, you can trade in this system. Second is I'm sorry, I can say this is the third, that is strategy builder. So when you speak about strategy builder is the option where you can create your own strategies.
तो एक स्ट्रैटेजी बिल्डर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज टूल्स। टूल्स के अंदर जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे पास स्कैनर्स है, मार्केट वॉच है, अलर्ट है, मार्जिन कैलकुलेटर है। सो टूल्स हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किए कि जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो, wherever you are trading, you no need to go, anywhere to see whether it's a market watch, it's a alert, it's a margin calculator, SIP calculator. So we are providing the one stop solution to all of our clients. Now let me take you to the Algo strategy builder. Now I have clicked on the Algo strategy builder. Yeah, so as you all can see, here we have strategies, here we have already template which is available. So here if you will see, यहाँ पे सारे कॉमन टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड इंडिकेटर का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ। तो ट्रेंड इंडिकेटर ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर आप जब भी देखोगे तो मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड के बेसिस पे यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई है। और जैसे ही स्ट्रैटेजी के अंदर कोई भी चेंजेस आएगा तो वो जो चेंजेस है वो अगर मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजीज है वो अपना जो कॉल का प्राइस है, प्रीमियम है, इन द मनी है, आउट द मनी है, उसको वो चेंज जो है वो कर देगा। So this is are the yeah, I hope my voice is clear now. So now if you will see, so वैसे बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल है। Here if you want to just place an order, so it's a very simple mechanism as I told you we have created. So the brain behind this is just click on that, let's say I'm feeling that today is I have to go and execute my order which is bear put spread. I just have to click on this option. Once I will click on the option, the a batch order will be open on my screen, and once this batch order will be open on my screen, I can just execute. अभी जहां पर execute का जो मेरा mechanism है, even in my execute mechanism also, I have adjustments. So what adjustments I have to do? I can do from here. Whether let's say if my one leg has been reach on the price, तो यहाँ पर जब मेरा कोई भी एक लेग है, मैंने यहाँ पर 2 लेग क्रिएट किए, इट्स अ मल्टी लेग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक सिंगल लेग चेक करता हूँ या एक सिंगल लेग जो मेरा लेग है उसका प्रीमियम जो मेरा डिजायरेबल प्रीमियम है वो यहाँ पर अगर मेरा आ जाता है यहाँ पर, तो मेरा जो एग्जिट है वो यहीं से हो जाएगा। सो एज आई सी दैट आई हैव बाय एटीएम that is of 93.50. Assume that if someone is if someone wants to do any changes here, what I will do is कि मेरा यहाँ पर price है, I will enter more 50 points here, 30 points of stop loss, and I will enter here as a save. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, मेरा जो पैरामीटर है यानी जो करंट प्राइस मेरा चल रहा है वो करंट प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो डिसाइड होगा, एसएल जो है वो मेरा डिसाइड हो जाएगा। ऑल्सो इफ आई वांट टू डू एनी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज में यहाँ पर मेरे पास में एडजस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो इफ आई फील दैट आई शुड yes. Yes, I prepared few examples, so let me know when we can cover those as well. Yes, I was about to ask you that. So I will just cover this option and then I will hand over it. So once you will see trader parameters, so यहाँ पे जब भी आप trader parameter देखते हो तो you have to enter what fixed profit you are expecting, fixed loss you are expecting. If you want to re-enter, then here we have the re-enter facility also, and I just have to submit it. Once I will submit it, that my strategy will start. And today, as you all can see, today the the market has been closed. If the market is start, so in the live market I can start deploy and continue with my trading part also. So this is the one example. So for coming few examples, I believe Mr. Sanjay has joined with us.
Probably he can give you more or better inputs than me. So I will like to, hand over my call to Mr. Sanjay so that they can help you and they can give you more few inputs about this strategy. Yes, Mr. Sanjay. Yeah, thank you, yes, thank you very much. Thank you for your kind words and the detailed explanation. Firstly, like to thank Bigul team for this opportunity. I will not take much of time. I will only take 15 minutes to explain three different scenarios what we can deploy at modern algos and how you can automatically manage entire strategy. So for that, I would require screen sharing rights. So can you Yes, please? yes. I will just stop sharing my Okay. screen. You can share it. Okay, so I'll start from the beginning. So this is the landing page what we have created. Probably you have this landing page on Bigul platform and in the Bigul app as well. So you'll have to simply click here and you have to enter your Bigul credentials. So I'll just use the test ID what I have with me. So once your login is successful, you will get redirected to modern algo space. So here we are only talking about algo strategy builder today, and rest of the options probably we can cover in another session. And meanwhile, you guys can simply log in and explore all the products. And if you have any question, you can also come back to us through our WhatsApp support icon, what we have here. Once you put any query, my support team will get in touch with you. So let us quickly go through the algo strategy builder. And before I discuss anything on the Algo strategy builder, we like to give an objective behind it. And this is a product what we have developed based on users' feedback, because we are interacted with a lot of users. And when we first introduced our option strategy builder, then the next question which came to us, that how do I automate my entire option strategy? That's fine that I can see option strategy builder where I can see my payoff chart, payoff table, I can analyze the strategy, but that's not it. How do I automate the strategy? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक बार आपने कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस की है तो उसके आप एंट्री और एग्जिट पैरामीटर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 15 साल में सीखा है, एंट्री लेना आसान है, एंट्री में कोई उतना दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज you don't have preconceived notions at the time of entry. You have, but depending upon your trading mentality or trading psychology. But exit is a very very difficult part. So मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि if I do a system based trading or if I do discretionary trading, both have different results. क्योंकि डिस्क्रिशनरी में जब मेरे को मेरी पोजीशंस के अगेंस्ट मार्केट जाता है तो मेरा उसके अंदर इमोशंस, so many things will come up. But wahi, if you can define your exit parameters at the time of entry, I can tell you that you can improve your accuracy minimum by 15%. This is based out of my practical experience, and I can also show data on that. So I would urge everybody to decide exit before you entry, before you do any entry, whether you do equity trading, whether you do options, futures, or you just be an investor. Even if you're an investor, your exit has to be pre-decided. So that is the objective why we have created Algo Strategy Builder, where we have brought option default strategies or commonly used option strategies with technical spread conditions to enter. बट इसके बाद ये चीज यूजर्स ने हमको बताया कि ठीक है, बट हाउ डू आई फाइंड द ट्रेंड? विदाउट ट्रेंड इफ आई एंटर इनटू अ स्ट्रैटेजी, लेट्स से द ट्रेंड इज बुलिश और मैं कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में एंटर कर लिया, then immediately you will see losses in your account. So to protect that also, what we have created a trend indicator. If you see on the top, it shows trend indicator. इसके अंदर हमने क्या किया, वी आर नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल इंडिकेटर, ये प्योरली is based out of option OI data, option chain data, which starts at 918, because I believe NSE provides data 3 to 4 months delayed, so we take 5 minutes difference for updating this. Every 5 minutes our system scanning based on what is happening in total OI of call side and total OI of put side. Then we have various volatility and standard deviation factors. Based on that, we show what is the trend. And in last 1 year, what we have noticed, the trend what we are showing here, 80%
or more than 80%, market remains in that trend. Now, whether market will have a choppy move within bearish or bullish, that's a separate part, but market will definitely be on the downside. So today, if you see this indicator got updated at 10:15, from 10:15 onwards, it had remained bearish for the entire day. Rest you can log in and you can track yourself on day-to-day basis. अभी आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको ऑटोमेटिकली हो गया. अब ये ट्रेंड के बेसिस पे कौन से स्ट्रेटजीज में एंटर किया जा सकता है, विच आर द स्ट्रेटजी विच वन शुड एंटर व्हेन द ट्रेंड इज डाउन साइड. सो इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर पॉपुलेटिंग दो स्ट्रेटजी विच यू कैन एंटर इन अ बेरिश मार्केट. तो जैसे आपको यहाँ पे नेकेड कॉल, बेयर पुट, बेयर कॉल, नेकेड पुट लॉन्ग, ये सब आप एंटर कर सकते हो. ठीक है. अब इसमें अपन बात करेंगे कि 3 डिफरेंट सिनारियोज वी आर प्रिपेयर्ड. कि एक तो ये कि अगर आपको स्टैडल करना है, ठीक है, स्टैडल मेनी पीपल डू ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, उसको कंप्लीटली ऑटोमेट करना है एंड आपको हर दिन वो टेम्पलेट सेव करने की जरूरत नहीं है. हाउ यू कैन डू इट? सो यू क्लिक ऑन शॉर्ट स्टैडल, ठीक है, and you enter 0 here, because if you enter 0, market entry will happen. Okay, click on start time and end time. अभी आपको सपोज ये स्टार्ट करना है फॉर ओनली ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे. क्लिक ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे. आज 9th of December है and you want to start this from 14th of December and you want to start at morning. You can decide whatever time you like to do. I do after 10, so I say 10:30 and exit at 3:15. Now, this you want to do it for 3 expiry. All right. So for that also you can simply say, okay, I want to do this until 23rd of February. So you don't need to come and define this condition each and every time. Okay. You have defined here that you want to start from next Wednesday and you want to continue that till February. And you only want to do on Wednesday and Thursday and only weekly options. And this should be, if you want to do intraday, you can do it intraday. If you want to do positional, positional. But normally straddle should be done intraday basis. So I'm selecting intraday and I've entered 0 here. At the time of straddle, I don't need to check any technical indicator, but sometime I check standard deviation. I check that if in 5 minutes, whether I have, or in 15 minutes, whether I have a high-low basis standard deviation breakout or not. Because I'll tell you, this is out of experience and out of practicality, I'm saying, whenever market breaks standard deviation value, and if it is breaking more than 1.5 times or 2 times, after that you will see market will consolidate at least for 1 hour or 2 hours, because beating standard deviation by 2 times will require a lot of demand in the market. And once the demand has come, and then supply will also come, and then demand supply mismatch will happen, and in that scenario we'll have a consolidation pattern. So if you want to do straddle, you can also check that at the 10:30 when you want to enter whether standard deviation has any breakout or not. Otherwise it will not enter for you. So in a trending market, if you enter short straddle, definitely you are not going to make money. Okay, seen a lot of videos, seen a lot of things on Twitter that do 9:30 daily straddle and close at 3:15. It will earn you money, but I wouldn't say anything on that. But that's not the right thing. You'll have to have various factors before your straddle becomes profitable week to week basis. So this is one of the factor. You can try it out. You can also use 30 minutes, and 30 minutes will be really good because you have 10:30 entry or 11 o'clock entry. So if market has standard deviation breakout, that means market has seen a trend. Now there are chances that market may consolidate. If market consolidates, then only you're going to get some return in straddle. That is my observation out of my practical experience. Now I have configured my entry time, and my technical confirmation, right? Now I want to do a straddle management. So if you see here, once you click on straddle, automatically my system is whatever may be the price, because you have selected ATM here, it will automatically pick the ATM and execute for you. Is my screen visible? Yes.
Yes, your screen is visible. And voice is also clear, right? Yes, yes, yes. Okay. So then the next important part, many users uh, do two kind of trading in straddle. Either they have leg-wise stop loss, which you can simply define that you want to have both 25% target and 25% stop loss. This is one way to do straddle. So you can define the same way for both the legs, 25 and 25, and save it. The other way that people, when they do straddle, they also want to do re-entry, meaning that if any of the leg stop loss is triggered, and then if the price again retracing back to the cost where you have initially shorted, and if you want to do the same leg you want to execute in the market again, how you can do it automatically. So for that, you don't have to select square of leg, you select re-entry. You define here your target and stop loss both 25% and 25%. You can define here in points and percentage. Normally in straddle we do percentage basis, and you'd say that if my stop loss triggered, then do the re-entry if the prices comes to cost price, meaning, and you want to do it only one time, or you can also enter multiple times. So that means 100 rupees you shorted. So your stop loss will be, let's say, so if you select re-entry here, you have to little go down, and in re-entry section, your values will be populated. So if, let's say you have shorted this particular leg at 100 rupees, so that means your stop loss is 125. Okay. If market goes to 125 premium, then your this leg stop loss will get triggered. If market again comes to 100 rupees premium for 18,500 strike, then this will again re-enter for you. Why people do this? Because when the market has a choppy trend, market will have both side move. Market suddenly will move 50 points up and then 50 points down. In that, if you are trading at ATM, that means your delta will also be near 0.5. So if market moves by 50, 60 points, then premium will also move by 25, 30 points, keeping other Greeks aside, only if you focus on the delta. Okay. So in that scenario, if you do the re-entry multiple times, then probably by end of the day, some theta decay you will be able to get it, or you will be able to recoup some of the losses what you booked in that particular leg. So each one have their own way of doing it. So this is the way you can define your straddle. You can define the strike selections. You can define this leg-wise stop loss, leg-wise target, and you can also define the re-entry. Now let us quickly see how you can use the functionality of adjustment at modern algos. So let's say you want to create an iron butterfly. It is my one of the favorite strategy what I do when I trade for monthly expiry, or if I have longer time spent in my head, because when I do a technical analysis, I can easily find what can be the expected range for benchmark in this month. Out of 10 times, 8 times I can easily gauge that, and 2 times probably you will not be able to find, because ultimately you are not beating the market. You have to follow the market. All right. So now if I do iron butterfly, the first important part for me is that I will say that I will enter at 0, and I don't need any entry and exit time. When I do butterfly, I immediately enter into the market. So these parameters are not important to me, and I don't check any technical indicator. Butterfly, you have to enter at a right point. You have to decide a particular day. So like if I do butterfly, I only enter on Monday. I don't enter on Friday. I have my reasons for that. So if we are discussing on strategy building, then probably we can cover with the data and why we are doing it on Monday, why we're not doing on the Friday, that we can discuss later. But I'm just going to focus here that how do I adjust my butterfly if market picks a trend, because butterfly will give you a profit if market remains between 18,370 to 18,630. And right now, let's say the market is near about 18,500, and you think the market in this weekly expiry either will expire between 350 to 750, it will not cross both the points. So you may have that thinking. Based on that, you have created this strategy. And one more important thing is that
if you see here, the strike selections and the strike difference is pre-populated by modern algo system. And for strike selection also, we are taking various volatility factor into mind. उसके basis पे automatically यहाँ पे आपके wings decide होके आते हैं, so that you will get the best risk reward if you create this combination. If you want to change it, you simply have to click on based on this particular checkbox, and then this drop down will be enabled, and you can modify the way you want to do it. सो अभी अपने को क्या देखना है कि ठीक है, ये बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी है, ये विंग्स है और ये लेग्स में शॉर्ट कर रहा हूं. नाउ व्हाट इज द रेंज वेयर आई विल बी प्रॉफिटेबल on the expiry day. So if you see, your break even down is 18,368, so let's do it 6,350, and break even up is 634, so let's do 650. So that means from the current price, अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे जाता है या 150 पॉइंट ऊपर जाता है, तो आपको वहां पे लॉसेस होने के चांसेस है on the expiry day. And before expiry, you can check what will be your profit and loss through these dotted lines. ठीक है, मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं. ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को इसमें लॉसेस होंगे. तो उस केस में मेरे को अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करनी है? सो फॉर दैट यू हैव टू एडजस्ट योर पोजीशन. फॉर द एडजस्टमेंट्स यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस पार्ट and click on adjustment future wise. Here you will say if the market moves 200 points up or market, sorry, 150 points, because our break even is 150 points from the spot price. I say 150, 150, and then you will say that, okay, at that time, whatever may be the ATM, that's sell for me. Okay, that means it will liquidate 18,500, both the call and put options. And at that time, suppose if it is 18,750, then it will liquidate 18,500 for you, and it will re-enter 18,750 for you. Now, why you have to do that? Because 18,500, if the far you are from the market, if your price become OTM, then the theta decay will be different if the volatility is not much. So you always have to be near ATM in order to get more of theta decay. So to make your butterfly profitable from losing, you have to adjust. For adjusting, you have to be in front of the screen. But at Modern Algos, we are providing this facility that you can define this at the time of entry itself, because you know your break-even points at the time of entry itself. So now you say, okay, 150, 150, I do this. And then same way you can also define for your P leg that 150, 150, you want to sell the ATM, and you just want to do it one time, save it. And then if you just drag it down, you will be able to see the adjustment parameters here. The same way you can also define for target and stop loss. Few people will do based on target and stop loss. In the same way it will open, so you guys can explore that. Re-entry we have already covered in saddle. Order parameter is very simple. For market, directly it will go to the market. If you want to change it to limit order, that's also available. And many TA practitioners, they will not immediately enter into the market. They want to give some buffer time before they enter into the market. So for that, they can use this limit option, and they have percentage and seconds. दोनों का किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको ट्रेड मैनेज कैसे करना है. ठीक है, तो एग्जिट पैरामीटर के अंदर आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैक्स प्रॉफिट क्या है. जैसे मान लो आप एक बटरफ्लाई करते हो, तो बटरफ्लाई के अंदर मोटा मोटी 50,000 के आसपास का मार्जिन लगता है. ठीक है, मैं 5% का अगर मेरे को प्रॉफिट मिले या 7% का प्रॉफिट मिले, तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द बटरफ्लाई. दैट इज माई बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, और दैट इज व्हाट आई डू. सो नॉर्मली लेट्स से 50,000 मींस माय टारगेट इज 3,500 इन बटरफ्लाई. नाउ इफ आई गेट मोर प्रॉफिट, जैसे इस केस में क्या हो सकता है, मार्केट चोपीनेस रहा, मार्केट घुमा सब जगह, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक्सपायरी के दिन वो 18,500 के आसपास बंद होगा, तो उस दिन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा इन द ओरिजिनल स्ट्रेटेजी विदाउट एडजस्टमेंट्स आई एम टॉकिंग. ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं क्या करता हूं कि भाई मैं 7% का इनिशियल टारगेट लेके चलूंगा, और मैं मेरे टारगेट को लोक एंड ट्रेल से मैनेज करूंगा. There are other options which you can explore. They are very simple to understand. नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब आपको आपके फेवर में, एंटोम आपके फेवर में आता है, थोड़ा बहुत आपके फेवर में आके फिर अनफेवर में जाना चालू होता है. उस केस को भी अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डिफाइन है कि आप बोल सकते हो कि अगर मेरा 2,000 का प्रॉफिट पहुंच गया,
तो मेरे को 500 तो प्रॉफिट चाहिए चाहिए, आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग इन दिस ट्रेड, ठीक है। तो जैसे 2000 आपका प्रॉफिट पहुंचेगा, द सिस्टम विल लॉक योर प्रॉफिट एट 500। एंड देन जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट ऊपर नीचे होके अगर इस एक्सपायरी के दिन 500 के आसपास क्लोज होना चालू होता है, दैट मीन्स योर प्रॉफिट कैन बी एट द मैक्स लेवल इन बटरफ्लाई। सो उसको भी मैं क्या चाहता हूँ कि 3500 तो मेरा पहला टारगेट है, उसके हर 1000 पॉइंट पे मेरा 500 पॉइंट से ट्रेल करो। तो जैसे 4,500 प्रॉफिट पहुंचेगा, 4000 पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, 5000 जाएगा, 4500 पे आ जाएगा, जो भी है मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी में आई डोंट टेक मोर देन 3% ऑफ मार्जिन एज ए स्टॉप लॉस। सो ओवरऑल मेरा स्टॉप लॉस 1500 रुपए का है। नाउ यू हैव डिफाइंड योर बटरफ्लाई everything automatically. Beyond this, I have not seen anything which a person can do in butterfly. Okay, so here you have defined your butterfly and how you want to enter. Strike came automatically. You can change the strike, you can define the adjustments, and you can also define your trailing target and trailing stop loss. Okay, so this is about butterfly. Now if you are a directional trader, we talked about a consolidation pattern, we talked about a longer length strategy. Now let's say you are a directional trader, ठीक है, और आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है। आज बेरिश मार्केट है और आपको बेयर पुट स्प्रेड में काम करना है, तो आपने बेयर पुट स्प्रेड पे दाव खेल दिया सुबह सुबह, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेरिश अपडेट हुआ, आपने ट्रैक किया, आप 1 वीक 10 दिन ट्रैक करो, पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन है वहां से पेपर ट्रेड करो। फिर आपको लगता है कि यार दिस वे यू कैन डिप्लॉय योर स्ट्रेटेजी, आपने बेयर पुट यहाँ पे डाल दिया, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक्स आ गए, प्रीमियम आ गया। आपको अगर जैसे प्रीमियम को चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। All of those we have discussed. The important point what I'm covering here is re-entry at a strategy level. ठीक है, जो अपन पहले री-एंट्री डिस्कस किए थे इन स्ट्रैडल, दैट इज फॉर द इंडिविजुअल लेग, ये पूरी स्ट्रैटेजी लेवल पे है। अब आपने बेयर पुट बनाया, ठीक है, उसका आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेट्स से उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, देन हाउ यू कैन ऑटोमेटिकली चेंज योर पोजीशन, ठीक है। तो उस केस में आप ये बोल सकते हो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इमीडिएटली रिवर्स कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपने बेयर पुट में एंट्री किया है तो फिर क्या करेगा, उसको वो बुल पुट बना देगा। तो डेबिट स्प्रेड से आप क्रेडिट स्प्रेड में आ जाओगे, आपके जेब से पैसा भी नहीं लिया जाएगा, और अगर मार्केट वहां से ट्रेंड चेंज करता है तो यू विल गेट द थीटा डीके, by which means you will be at least covering a part of losses, or sometime you may also turn into the profitability. So these are the few examples what we wanted to cover on this page. I would like you guys to explore and come back to us with many questions. You have various other products here, so it will be difficult to cover everything in one webinar. So we'll request Beagle team to allow us to present for other products in the coming webinars. So over to Yash. This is what I wanted to cover. Thank you so much, Sanjay. Thank you so much for sharing the feedback and sharing the important option where all of our client they can avail such facility. So I believe we should move ahead with question and answer round. So I will like to give opportunity to each and every one of you, those who have any kind of question. You all may ask us a question if in case if you still want to understand few more option, few more inputs or anything, or else you have our a board line number where you all can reach us and get in touch with us if in case if you need any help or something. So if in case if anyone has any questions, any doubt, they may call us on 8045025533. You can send us an email also, that is on support@biggle.co. As you know, if you will visit our website www.biggle.co, where you will get this option of login in the modern algo, you have to log in with your login credentials of the account which you already hold with the help of आप जो मोबाइल ऐप के अंदर वेब में ब्राउजर में जो आप लॉगिन करते हो वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. Yeah, so I can see yes, so here we have the question. Mr. Shashank Agarwal has a question. Sir, will I get the recording of webinar? I couldn't attend from beginning. Yes sir, sure शशांक जी. ये जो वेबिनार है ये हमारी जो YouTube लिंक है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो आप वहां पे पूरा जो वेबिनार है स्टार्ट टू एंड देख सकते हो. साथ ही साथ जो इसके पहले हुए जो वेबिनार है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो सर.
I think, yes, if there are any questions, they can come back to us on email or WhatsApp and we can get back to them. Right. So we can say thank you to all of them. Yeah. So thank you so much, everyone. Thank you, all of you, to join the webinar. And if in case if you have any question, any doubt, you have our boardline number. You can reach us on 80450255533. Thank you so much, Sanjay, for joining and Thank sharing, you. Thank you. Yes. highlighting few of the important points. Thank you. All right. Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a good day.